दोस्तों, क्या आप भी टोनी स्टार्क के जैसा एक ऐसा एआई क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके एक इंस्ट्रक्शन पर आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट क्रिएट करके दे विद 3D एनिमेटेड मॉडल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विद पुलकित और मेरा नाम है पुलकित गोयल और आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं टेक से रिलेटेड न्यू आइडियाज विद न्यू प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों, आयरन मैन मूवी में जो एआई दिखाया गया था वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सा वर्जन बनाने वाले हैं जिसमें आप कुछ भी पूछेंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट एयरप्लेन, तो वो उसके बारे में एक मैन्युस्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा आपको और उसका एक 3D मॉडल भी क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल करी है, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना है और एंटर करना है और अब हम आगे अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, विकिपीडिया का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट से रियल इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए, और VPython का यूज़ कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट प्लस 3D एनिमेशन के लिए, और टाइमिंग का यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फॉर टाइमिंग एनिमेशन के लिए। ओके दोस्तों, यूज़र यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखेगा उसके लिए एक टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जनरेट करेंगे हम, डिफाइन करके जनरेट मैन्युस्क्रिप्ट को और टॉपिक को।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ एरर्स आ गए हैं जो हम लाइव आपके सामने सोल्व करेंगे। तो दोस्तों चलो करते हैं अपनी सारी एरर्स को सोल्व और करते हैं प्रोग्राम को रन। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मानता हूँ दोस्तों हमारे पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, एक अच्छा कैमरा नहीं है हमारे पास, पर दोस्तों हमारे पास एक यूनिक विजन है, एक न्यू आइडियाज है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।